we are doing central orbits lecture 7. In the lecture 7, we will discuss motion of particle in an ellipse under a force which is always directed towards its focus. Find the law of force, first part. Second part, the velocity of particle at any point of its path. And the third point is the periodic time. So to find the first part, the law of force, we will always use differential equation of central orbit in polar coordinates. So let us first write equation of ellipse with focus as its pole in polar coordinates, which is L upon R is equal to 1 plus E cos theta, and where L is the semilatus rectum of ellipse, and for ellipse eccentricity, that is E is always less than 1 and greater than 0. So to find the equation of law of force, we need to write this in terms of equation of a differential equation of central orbit, which is d2u upon d theta square plus u is equal to f upon h square u square. So we need to find this left hand side d2u by d theta square. So to find d2u by d theta square, let us put r as 1 upon u. So changing the equation in terms of u, we will get L into u is equal to 1 plus e cos theta. So this implies u will be 1 plus e cos theta upon L. So differentiating du by d theta with respect to theta, we will get minus e cos theta ka sin minus sin theta upon L. E and L are constant. Again differentiating d2u by d theta square, it is minus e cos theta upon L. So differential equation of central orbit is d2u upon d theta square plus u is equal to f upon s square u square. So let us put the value of d2u by d theta square, which is minus e cos theta upon L, and value of u is 1 plus e cos theta upon L, and this is f upon s square u square. So after solving this, we will get f is equal to h square upon L into u square. So u square is 1 upon u is 1 upon r, so we will get u square as 1 upon r square. So it is h square upon L 1 upon r square. So let us put h square upon L as lambda, so we will get f is equal to lambda upon r square, where lambda is a constant. So therefore f is inversely proportional to square of the radius. This is equation of law of force, which is the first part of this numerical. Again, we need to find velocity of the central orbit, which is ellipse. So to find the velocity, we know v square in is equal to h square 1 du by d theta whole square plus u square. We have discussed it earlier in our previous lectures, how to find velocity when equation of central orbit is given to you in polar coordinates, and how to find velocity when force is given to you. So here we have given the equation of central orbit in polar coordinates, which is L upon R is equal to 1 plus e cos theta. So we need to find velocity when central orbit equation of central orbit is given to you. So इसीलिए हमने इस फॉर्मूले को यूज किया. So we have formula of velocity as v square equal to h square du by d theta का whole square plus u square. We have value of du by d theta with us and value of u also. So substituting the value of du by d theta, which is minus e sin theta upon L, and u is 1 plus e cos theta upon L, squaring, we get e square sin square theta 1 plus e square cos square theta plus 2e cos theta. So taking common e square, we have sin square theta plus cos square theta is 1. So we have 1 plus e square 2e cos theta. सो 2e cos थीटा. अब हम फिर से इक्वेशन ऑफ अपना इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट यूज करेंगे 1 प्लस ई कॉस थीटा, और वो किसके इक्वल है L अपॉन आर के. सो ई कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी L अपॉन आर माइनस 1, और ई कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे. सो आफ्टर सब्सिट्यूटिंग हमारे पास क्या आ गया, ई स्क्वायर माइनस 1
प्लस 2l/r। सो 1 प्लस ई स्क्वायर हमारे पास होता है b² / a², और लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल होती है, l इज इक्वल टू b²/a। तो जब हम यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो किसके इक्वल है b²/a के, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस b²/a², और ये एज इट इज़ 2l/r। फिर से हम यहाँ पे l स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है, सो यहाँ पे 2l/r l स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे। तो l स्क्वायर को जब हम अंदर लेके जाएंगे तो ये l से l स्क्वायर, नीचे एक l रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा l स्क्वायर, और आपके पास यहाँ पे बनेगा 2/r, l कॉमन अगेन, l कॉमन हेयर, 2/r b²/a²/l, and we will substitute value of l which is b²/a here. So b²/a cancel, a से a cancel, so आपके पास क्या बचेगा h²/l 2/r माइनस 1/a, और h²/l को हमने ऊपर भी क्या लिया हुआ है, लैम्डा, सो वी विल गेट लैम्डा 2/r minus 1/a is the velocity v square. So this is the velocity of the central orbit. Again in the third part we need to find periodic time. So periodic time हमारे पास क्या है, that t be the time taken by the particle in describing the whole of the ellipse. So whole ellipse मतलब area of the ellipse, और area of ellipse क्या होता है हमारे पास पाई ए बी, और जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो इलिप्स का एरिया कवर करेगा, तो हमारे पास नीचे लीनियर वेलोसिटी ना होके, क्योंकि उसने एरिया को कवर किया है, तो किससे डिवाइड होगा, एरियल वेलोसिटी। सो इतना तो उसने टोटल होल डिस्टेंस कवर किया है, एरिया ऑफ इलिप्स, और नीचे किस वेलोसिटी से, एरियल वेलोसिटी से, और हमने एक आर्टिकल किया हुआ है एरिया ऑफ वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज constant which is equal to h/2. So let us take aerial velocity as h/2 and area of ellipse as pi ab. We get 2 pi ab upon h. So हमारे पास आ गया t is equal to 2 pi ab upon h, और h हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल में किया था h²/l। अभी जो हमने डिस्कस किए फर्स्ट और सेकंड पार्ट, वहाँ से हमने h²/l को हमेशा किसके इक्वल पुट किया, लैम्डा के। सो यहाँ से आपके पास h की क्या वैल्यू आ जाएगी, √λl। सो पुट कर देंगे वैल्यू √λl, और l हमारे पास क्या था, लेटेस्ट रेक्टम विच इज सेमी लेटेस्ट रेक्टम विच इज इक्वल टू b²/a. सो पुट द वैल्यू ऑफ semi latest rectum of ellipse which is b²/a. So after substituting the value, b से b कैंसिल हो गया, ये √a ऊपर चला गया, सो ये आ जाएगा a की पावर 3/2, सो इट इज़ a की पावर 3/2, 2 pi upon √λ. So this 2 pi root lambda is constant, so t is depending upon a raised to power 3/2. So this is the periodic time period of the ellipse. So thank you for watching the video.